of the Vice Chancellor's Secretariat, among others. With over 2 decades of teaching and research experience, Dr. Sharma's contributions span cutting-edge areas of physics and material science. His research interests include carbon nanostructures, pure and doped nanoclusters, two-dimensional nanomaterials and their heterostructures, complex metal hydrides, for solid-state hydrogen storage, peroxides, high-entropy alloys for high-energy applications. Dr. Sharma has published more than 100 research papers in peer-reviewed international and national journals and conferences, authored 2 research books, and successfully completed 3 research projects sanctioned by funding agencies like DST CSIR of amount around 40 lakhs. He has participated in more than 50 national and international conferences and has delivered more than 40 invited talks in FDP's workshops, seminars, conferences, etc. As a mentor, he has guided 10 PhD students, with 4 more currently pursuing their research under his supervision. He was awarded the DST's SERB Young Scientist Award in 2012. Professor Dr. Hitesh Sharma is looking forward to contributing administratively to the Institute's growth and promote excellence in academics and research. So his biodata is very wide. We are so thankful that in spite of his busy schedule, as he was telling, but because he had already committed to come to this institute, he was able to spare time, and we are getting an opportunity to interact with him. Thank you so much, and once again I welcome you to the DAV College. Thank you, sir. So, without wasting much time, I would now like to invite our guest speaker, Dr. Hitesh Sharma, to commence his session on the topic Advances in Quantum Mechanics Based Theoretical Methods. लास्ट बैठी हुई आवाज पहुंची आवाज सर कैसे करते हैं A very good morning to all of you. Good morning. Okay. So we'll make it more interactive. Hopefully you learn a few new things from this lecture. Before I start, I would like to express my gratitude to organizers, especially HOD Physics, Kumar Rajivji, and other organizing committee members for giving me the opportunity to interact with you. Dear students, as we know, just in the earlier lecture, Harpreet has very nicely presented his work on quantum sensors. So quantum work is quite familiar to most of you, I guess. So in this lecture, we will be discussing, learning something about what are theoretical methods which are based upon quantum mechanics, which can be used for understanding of various materials. Is the topic Advances in Quantum Based Methods
we are talking about. So we should be very clear what type of advances we are referring to. And then to understand those advances, I will start from the very basic, from the scratch, and then take you to that level, what people are working at currently in various labs, at what level they are working. So we should, without wasting much of time, how many of you are aware 2025 is being celebrated something for quantum mechanics? Some year is being celebrated. Are we aware? How many are aware of this fact? 2025, it is being celebrated by United Nations as International Year of Quantum Mechanics and Quantum Science and Technology. Why this? Because now we have realized quantum mechanics is a reality, and we are using quantum mechanics based like sensors, materials, phenomena, processes, understanding those processes and using them for human mankind. That is possible. Therefore, realizing its importance, and that we are celebrating this as an International Year of Quantum Science and Technology. And this is. So this is ultimately what type of advances we are talking about. So this picture, it simply shows you a robotic arm. This is of course Berkeley lab, and this is material science lab. So this is the latest advances which we are talking about. Now look at this picture very clearly. You will see the latest advances in the experimental techniques, and of course there is a theory behind it. These are the robotic arm. You can see that materials are placed nearby. This robotic arm is fully functional, driven by AI. AI of course is based upon physics laws and all the concepts we will be discussing about. It is able to synthesize materials, new materials of its own. It will start up from basic scratch, you give it some command to it. It will optimize the combinations of materials and then see what type of properties I want to have in my material. Accordingly, to keeping that property in mind, it will optimize all the combinations and then examine the stability of its own. When it will verify the system is very stable and it is giving me type of properties which I should be getting, then it will start synthesizing. And it is able to synthesize very precisely, accurately, and the volume of work, the speed of work is enormous. So this is ultimately kind of a latest methods we are talking about. Experimentally, there is no human intervention required, minimal. Theoretically, everything it understands first the physics, then it will go for manufacturing. That is the kind of advances we are talking about these days. So just we student of science, we just try to understand. We are dealing about the last slide you just saw. We are dealing about AI and quantum mechanics based some combination synthesis methods. So if you understand our humans' ability to understand science in various stages, we have been using very abstract knowledge earlier. And gradually we started formulating some mathematical formulations, very crude. Then advanced mathematics, they are required. Solve those equations, you get precise mathematics, they are required. Solve those equations, you get precise exact equations, and we are able to launch the rockets and spread that tangentially successfully. Because it is very, very abstract, we know. Parallelly, if you have to do the quantum mechanics, in small world, atomic world, things are very small, you cannot measure it precisely. Every physical quantity has an uncertainty to it. Then classical mechanics just cannot work there. We go for quantum mechanics. Parallelly, the objects you are studying, if the speed is pretty less, classical is fine. When speed is very large as compared to velocity of light, then we have to take care special theory of relativity into our picture. And to describe a system, small system, moving very fast, I can do pure quantum mechanics, I have to do for quantum field theory. So parallelly, entire science which humans could understand in this century is classified into 4 categories.
And parallelly, our understanding about the atomic world also has changed drastically over the period of time. Actually, if you go to this cartoon, the very first I deliberately mentioned it's a Maharshi Kanal. He's an Indian saint, you can say. ऋषि मुनि पहले जो हमारे होते थे, पहले एक एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी है। उसके बाद हम डाल्टन पढ़ाते हैं सभी को, डाल्टन हुआ है बाद में, वो सबसे पहले वहाँ पे थे। तो इंजीनियर क्या जानते थे, एटम्स के बारे में कुछ पता नहीं था बेटा। अभी क्या पता है हमें? We know quantum picture of atoms, which was finalized in 1926. So our understanding about the atomic models that has also evolved, and we know pretty. So now if we see entire growth of science in terms of scientific methods, if you see this slide, you will very well say in which domain we are moving right now. If you see earlier empirical methods, old observation methods, method was used. Then ultimately, in the second shift you see theoretical skill, all laws of physics, chemistry, biology, they were discovered in last century or so. Empirical, model-based studies, those was considered. And then after 1950s, this classical modeling, etc., it started. And in last 30-40 years, quantum-based modeling, it has taken over. So now quantum models are pretty accurate. We are able to formulate them, solve them with a lot of efforts, that's fine. But in last 20 years, if you see after 2002 and now 2020, all these methods, quantum-based methods, they have now matured, and now AI integration, that is automation is taking place. Now we don't have to do these things manually. Basic things we can formulate, and thereafter, once you know the basic science of all the methods which you want to use for any system, thereafter you can go for the automation. Automation will take care of itself, and result is the first slide I show you. Robotic arm, equipped with full knowledge, it can understand, it will formulate. If it satisfies criteria of stability, it will start synthesizing, and it is synthesizing accurately without human interference. Okay, students? These are the basically domains which should be made aware of. We are working at present, any science field, physics, chemistry, biology, whatever, it is being integrated with the latest AI technologies. Automation is the key, but before you have to go for the automation, third computational science domain is very much required. You have to formulate your problems in such a way, and accordingly the computer skills which are required for making them into the softwares, that is very much required. Then we can go for the latest techniques, kind of a automation. And at the scale at which is operating, it's phenomenal. This one now, we start again from the scratch. Now, just I classified type of methods of what we have to do. How do we start? How do we start? Dealing with any material. As we know in classroom, textbook, school time, college days, we know that any state of matter, if you classify them into based upon their states, we know the atoms are very much there in all the states. Their inter-atomic interactions, that is playing very central role. So whether we have to classify, synthesize, make any material in solid state, you have to make something in liquid state, you have to make something in gas phase or in plasma state. Central thing which will require is the nature of atoms and then kind of interactions. If we know, then I can start dealing with the materials. So dealing with the for any state of matter, interaction happens to be interaction is very, very important. So nature of atom, when I said, as we know, this atomic picture is very clear to us, and there are approximately 94 atoms which are available to humans on this earth, which are stable. So whatever we have to synthesize, we have to synthesize using those 94 atoms, building block. So internal atomic structure is clear to us, I assume. I'm not going into that direction. Atomic picture is clear to us. Actually, if you see these numbers, some of the numbers are here, just keep them in mind, because I will be referring to these numbers again. So far, there are more than 50 million chemicals on Earth,
Most of them, they have been last 3, 4, 5 decades, they will synthesize. Or they are predicted, combinations huge. This includes crystals, organic, inorganic, all type of materials, biological materials, all they are available in nature. So now see this, using these 94 atoms, if you see there are various materials, every material has a very different property. Their building blocks are pure atoms, but parallelly their properties are very different. Some of them natural, some of them manufactured ones. So their properties primarily, it is governed by either atom is in excited state or it is in ground state. So all the properties of any material are primarily controlled by is building block atoms, whether they are in ground state. For these properties, cohesivity, phase transition, charge densities, magnetic order, dielectrics, we require properties of atoms in the ground state. If you have to study any property of material like transport, optical property, spectra, we need to consider the excited state of atoms. So atom is very central, it's ground state or excited state. When we know about the atom, then now we can combine the atoms together. Ultimately, single atoms will rarely exist. They are only as a molecule or as a solid. So when we start combining atoms and to form molecule, we have to have better understanding about the interactions. We all are aware of what type of interactions can take place between two atoms, different type of atoms. That interaction, knowledge about this interaction is very much essential, required for predicting or understanding any material. So there are simple bonds, strong bonds, covalent bonds. Then there are other type of interactions also. Weak type of interactions, molecule-to-molecule interactions. So all these interactions we are required to one-to-one type of interaction. This is also very important. So all interactions you can classify between atoms. That is much required. The third aspect for understanding any materials behavior is structure. I have, like you know, diamond. Diamond also consists of carbon atoms only, but their arrangement is very different. Whereas graphite also consists of carbon atoms only, their arrangement is very different. So structure of atoms within the crystal, that depends and that decides the property of atom. So arrangement of atoms is also very, very important in addition to atoms' intrinsic nature and interatomic interactions. The arrangement also plays very, very important role. Natural things also you can say that structure is very, very important. Like fibrous materials in trees or various organic materials. The structure is also very, very important and very different kind of a structural ratio. Very not a crystal symmetry, but very different kind of structure. These are the elements which are available to us. Like there are some in kitchen we do cooking, so we know what type of pulses, what type of spices are available to us. So nature has given this type of composition materials to us to work on. So we can have any type of combination of materials using this type of elements from periodic table. So now, since we have to deal with the materials, and I am discussing about quantum methods. So these are the materials, basic properties we know, atomic nature, their interaction, their arrangement. These are key essential components. Now, in order to understand that, I have to make some sort of a computation method for that. How can I understand my material in my computer using quantum mechanics based methods? So for that, basic things about the modeling, what type of models we can think of, that needs to be understood. So we know something about models. What is model? What are models? What is simulation? These are very closely related terms, but very different. If you say humans understand anything happening, we immediately get some modeling in our mind.
If I just give an example, think of an apple and we are throwing it in the sky, you will immediately visualize some apple, it has been thrown into the sky. So humans understand anything by creating model in our mind. So similarly, models are similar things. So we can have a physical models, like you have to make some building or some sort of you make a physical model and then you examine that and then you go for whether it's stable, it's not stable, then you go for the actual realization. Parallelly, in science, in addition to physical, there is a different kind of you perform an experimental kind of a thing. You do something experiment and then draw some results, then make some conclusions. Then usually our in 20th century, most of the experiments they are taking place this way. Performing experiment with a model of system. So within this experimental model, you see the physical model and mathematical model. So in model of in physics we deal with, or in chemistry or any engineering field, we primarily deal with the mathematical model. We have to create some mathematical equations to define that equation, to describe that particular behavior. Like Earth is moving around Sun, or Moon is moving around Earth. To make some mathematical formulation for that, immediately you can make its trajectory. This is the path I can define its motion. Then you can add complexity to the solutions and start working. There's a simplest model. Simple one, mathematical equation is governing, and you have an analytical solution, fixed output. You give some fixed input, so mathematical equation is there, you give a fixed output. That's the kind of a analytical solution. One input, one output, standard fixed rules. It doesn't change with time. It always gives me similar kind of a result. That's the kind of a analytical model. Mostly in the engineering field we do with this analytical solutions so far. Now things are changing. That is a kind of a simulation I'm talking about. In simulation models, what we do is we formulate some equations. What type of equation? I will be discussing in 1 or 2 slides after that. These are the type of models in physics, in chemistry, we can rely upon. Not going into much of detail, what you see is primarily I am classifying by entire material behavior, what I am describing, whether it's a static, it's a dynamic. Static means it's a static, it's not changing with time. Dynamic means its behavior is time dependent. That we are trying to factor in. But the second is, are my quantities fixed, deterministic or stochastic? Because there is variability factor is there. Like we have various statistical methods are there. So we have to factor in that. So what type of material I want to study, what type of behavior I want to study, accordingly I have to choose a block. And according to block I have to write my program, what I want to do. So there are various possibilities available for dealing with the models. So now this is again models based upon type of physics we are using with the time scale or the length scale or size scale. Just I mentioned, in case of macroscopic systems, we required very different kind of methods. Like in mesoscale or in higher scales, we required dimension micron, millimeter or meters. For that, physics equations are very different, models will be very different, solutions will be very different. Whereas in case of nanometer size, atom size, you combine 4 to 5 atoms, 1 nanometer size. In that dimension, we classical mechanics, that doesn't work. So we rely only on the quantum dimension. So when I'm discussing about quantum mechanics, means I am dealing with the size of nanometers and time scale of less than picoseconds. That's the kind of a scale we are dealing at quantum level. And this is actually just for reference I am mentioning this. When the DFT method started in 90s, this question was asked by everybody. This is computational methods. इसका फायदा क्या होगा? इसमें से रिजल्ट क्या निकलेगा बाहर? तो 10 में पहली बार एक स्टैट्स आया बाहर. More than 350 materials were predicted. New materials were predicted based upon these quantum-based methods, and they were those who synthesized ultimately. Then they were its predictive power. The predictive power of these methods, it was demonstrated by in 2010 the first time. So when this predictive power of these computational methods were displayed, then new way of doing research it evolved. So far,
people were doing experiment, they were giving suitable theory to explain the results. People were doing purely phenomenological models, then they were giving some equations, then experimental people used to verify that. In this case, this computational methods we are dealing about, it has evolved as a third method. It not only explains the theory, it not only explains the experimental data, but it can predict before experiments also. Without doing experiment, you will predict the combinations, you can predict the properties, and then which are the most stable ones, you can synthesize them in lab, and then in that way, lot of material efforts, lot of time is saved. So new method, this has evolved. Now this has further gone to next level. This is the latest which I had mentioned in the first slide. Now this is an integration of quantum methods with AI technology and machine learning. If you see the last component, if you see here, I want a material for a particular application. My requirement is I require a material for a particular application. So what I do is, these are the things which are available to me. Elements are available. I have to know that interaction, arrangement, everything which I just mentioned. And once I know that, I have optimized some systems, stable systems, and then I start making their reference library. Experiment, theory, everything is well. This is what we have, and this is machine learning integration with the all combinations. It will start making databases. All information available on that material will be available. And then it will predict the combinations, which are the most stable ones. It will even optimize the synthesis procedures also. Then ultimately, combining this, we can have a kind of a material which is available as per our requirement. So with the deep learning, these are latest numbers. These numbers are mind-boggling. Just you can just imagine these numbers, what they are talking about. Now these DFT methods, which I am just talking about, quantum mechanics-based methods, they have been integrated with the artificial intelligence. What is result is, this is I'm talking about single word tool only. There are a couple of tools. This tool we call genome, graphic network for material exploration. It has predicted 2.2 million new crystals. 2.2 million. In last 5 decades, we have been predicted, all scientists combined worldwide, they have been able to predict only 20,000 only. And this within a couple of years, in the last 2-3 years, it has been able to predict 2.2 million new crystals. Now, again same question, इनमें से कितने क्रिस्टल स्टेबल हो गए, बनेंगे नहीं बनेंगे, कुछ आता है अपने कंप्यूटर तो कुछ कर लिया अपने हाथ में, क्या एक्चुअली बन सकते हैं क्या? इसके बाद में क्या किया, इन पूरे कॉम्बिनेशन में 3,80,000 ऐसे जो स्टेबल है और बनाए जा सकते हैं. अब इसी को वेरीफाई करने के लिए एक और लैब इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम शुरू कर दिया. 736 इनमें से उन्होंने बना भी दिए, सिंथेसाइज भी कर लिए यूजिंग दैट रोबोटिक आर्म without any human intervention, automatic. Of this power of AI, DFT quantum mechanics techniques are very much essential there. It is solving those very same equations by its own, trying all combinations, A with B, B with C, C with D, all combinations. If we have to solve this equation, it will take nearly 800 years for us humans to do this. 800 साल की जो रिसर्च आगे हो रही थी, इस एक प्रोजेक्ट ने 1-1.5 साल में करके पूरी कर दी. तो मटीरियल साइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आगे जॉब्स का क्राइसिस आने वाला है. अभी भी देख सकते हैं. जब एक लैब में एक रोबोटिक काम एआई के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना के आपको दिखा देगा, कौन सा मटेरियल किस पर्पस के लिए चाहिए मुझे, वो बना के दिखा देगा, तो मैं फिर ड्यूप्लीकेट करने की जरूरत क्या है? एक एक्सपेरिमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए और फिर बताएंगे कितना टाइम, 3 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं आराम से. अब ये सारा चीज अपने आप को सेल्फ इम्प्रोवाइज भी कर रहा है. दीज नंबर्स इनको समझना पड़ा, माइंड सोचना पड़ता है कि कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ एआई, और ये यूज करने के लिए आपको लेवल 3 तक पहुंचना पड़ेगा. पहले लेवल 4 की बात हो रही है.
तो दुनिया भर में लेवल 4 में इसमें लोग काम करना शुरू कर गए हैं। इंडिया में शायद एक आधा ग्रुप भी है IISc बेंगलोर में, वो कुछ एक सिस्टम पे कर रहा है, अदरवाइज इंडिया में ऐसा नहीं है। हम वही कर रहे हैं अभी, सिंगल सिस्टम करके उसका पेपर निकालेंगे। वैसे ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक साथ में करना चाह रहे हैं। इसमें मुझे टेक्निक थोड़ी ऊपर चला गया, अगर आप यहाँ देख पाएंगे ना, ये वाला जो ये हमारा एग्जिस्टिंग मेथड है। DFT जो क्वांटम केस मेथड करते हैं, ये वाला जो इंजन वाला, all combination it will optimize, calculations are purely quantum based only. Once it is done, then this AI will take over. It will create its own models, own structures, own internomic potentials, everything it will design its own. Then start replica and mass scale, day and night working together, repeating large number of databases. So these are the limits you can see. What we have just, I mentioned these numbers just for reference. What we have done, what this project has done, the stable number of crystals which have been predicted. The number is very, very huge. So AI-based methods are to be integrated with all the quantum methods. They are already influencing all the domains of science. So we have to, in any domain, we can design problems, we can design AI tools, and then accordingly start working. And we are just in the beginning of this revolution. Just you can see this, what is the potential in this quantum mechanics based methods with AI. So these are the projections for next 10 years. So we can see just we are in 2025. So it will be influencing process optimization, predictive power of modeling and simulation, and material studio and designs. All the three domains, they will impact in a big way in coming years. So these are the basically to talk about latest advances, theoretical methods, experimental methods, which we are dealing about, especially in reference to material science only. For nuclear physics, hydrogen, they will be different. I'm not aware of those domains, so I'm just focusing purely on the materials only. Students, is it clear up to this point? So now, couple of slides more. Then I will give you some examples for that, how accurate these systems are, how we can use them. So for any of these methods which we have to use for deciding or describing, we have to create some model for any material. And we all know, you take any material, piece of wood, iron, anything, if you go inside, peep inside, what you see is collection of atoms and electrons. So ultimately every atom, every material is made up of atoms and electrons, that's what. So you see this model we are describing, red dots are nucleus and blue dots are electrons. So to describe any system, between liquid, between solid, between anything, basically is this one. This is what I start with. So the methods which are based upon quantum mechanics methods, they are also classified as ab initio methods. When I say ab initio is starting from scratch. In every model you create, in any, so far you might have studied various physics models like Bohr model, whatever. In all those models, people used to assume something. There were assumptions. There were hypotheses involved. But in case of ab initio methods, which are quantum mechanics based methods, there is less of that. We are starting from a very scratch to start this calculation for this number of atoms, this kind of a system. What I require is a single atomic configuration of a single atom. One atom, how much electrons are there? What is the atomic configuration? I can classify it. It will be electronic configuration will have this much. That's what is required. So that is why we are starting from scratch without any approximations. So we are terming these quantum mechanics methods as ab initio methods or first principle calculation methods. These words, these definitions, you can always, anybody can ask you, well,
quantum mechanics methods are called evolution methods. Why they are called first principle methods? Because starting point is from scratch we are starting, and we are starting purely with the atomic number of a particular element, nothing more than that. We are starting. So, just like I mentioned, what is evolution methods? Starting point is atomic number. Then we start solving equation and then predicting property. So, how do I start this method basically? These are my evolution methods. आप सबने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में सुना सब बच्चों ने? श्रोडिंगर इक्वेशन, have you heard of it? क्या चीज होती है? What is this equation? What it describes? श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? That is the basic of foundation of quantum mechanics. Whatever you precisely you want to deal, it starts with the very fundamental, very basic Schrodinger wave equation. क्या कौन सी इक्वेशन है ये? कोई बता देगा बच्चे? जस्ट देन आई कैन, जो पता होगा आपको वहां से स्टार्ट करूंगा मैं. किसके लिए यूज करते हैं बेटा इसको? स्टूडेंट्स नाम सुना सकते हैं? किसको डिस्क्राइब करता है? इतना ही बता दीजिए. वेव फंक्शन. चलो वेव फंक्शन तो उसका सॉल्यूशन में आएगा. किस चीज का डिस्क्राइब करता है? मैं तो बॉल फेंक रहा हूँ, उसके लिए मैं श्रोडिंगर सॉल्व कर सकता हूँ. कोई बॉल है मेरे पास, मैं थ्रो कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या उस बॉल के लिए मैं श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ? या तो गैस मॉलिक्यूल है इस रूम के अंदर, उसके लिए सॉल्व कर सकता हूँ. अब तक डिस्कस किया हमने कि हम मटेरियल्स को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से. तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक इक्वेशन सॉल्व करनी है वो क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन. अब क्वांटम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑफ कोर्स श्रोडिंगर इक्वेशन सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, ये क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है. ये किसके लिए वैलिड है? प्योरली क्वांटम. अब जब एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है. जब इसके लिए मैंने श्रोडिंगर सॉल्व कर रही है, दिस इज बेसिक इक्वेशन H रेफर्स टू एटोमिक. इसमें सारे एनर्जी नंबर्स आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन, ऑल द नंबर्स. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास क्या होगा? यू विल हैव काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. अगर मेरे पास कुछ होगा तो बताता हूँ मैं आपको. पर जहाँ थोड़ा बोर होंगे ना, रुक जाएंगे, ऐसे लग गया तो बोल देंगे मुझे, ठीक है? क्योंकि जहाँ तक बोलेंगे थोड़ा आपको स्क्रैच में आना जरूरी है. जब ओवरऑल की श्रोडिंगर सॉल्व करनी है मैंने, तो आपको अब क्वांटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्वांटम वर्क की तरफ जा रहे हैं. इक्वेशन श्रोडिंगर कैसे सॉल्व कर रही है हमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्क्राइब करना है श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके, क्या इलेक्ट्रॉन कभी फ्री हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन भी फ्री, क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट? इलेक्ट्रॉन आपका, मैं उसको कहाँ रखकर पकड़ के यहाँ पे कमरे में खड़ा कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन को? पॉसिबल नहीं ना. अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ऐसे बिहेव करता. आपने श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने बीएससी में किया होगा. फ्री पार्टिकल, करेक्ट? फ्री पार्टिकल की एनर्जी इक्वेशन ऐसे बनती है. फ्री का मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, फ्री है जैसे मर्जी. तो इस तरह की इक्वेशन बनती है. अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करूँ, किसी सिस्टम के अंदर ले जाऊंगा. वही इलेक्ट्रॉन को मैं किसी पोटेंशियल में ले जाऊंगा. तो क्या होगा, मैंने बाउंड्री कुछ लगा दी बीच में. जैसे किसी चीज को हम कन्फाइन करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, ये जानना पड़ा जरूरी सबके लिए. क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, व्हेन यू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे उसके मोशन में है, चाहे मोमेंटम में है, जब भी आपने बाउंड्री कंडीशन लगा दी, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो आइगन वैल्यूज होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, क्वांटाइज हो जाएंगी. तो क्वांटाइजेशन और क्वांटम में ऑटोमेटिकली आती है. जैसे हम यहाँ इस रूम में बैठे हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, कन्फाइंड है. जब कन्फाइनमेंट में तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सोल्यूशन होंगे वो डिस्क्रीट हो जाएगी अपने आप ही. क्वांटम वर्क अपने आप स्टार्ट हो जाता है. तो कन्फाइनमेंट लीड्स टू क्वांटाइजेशन. दैट्स काइंड ऑफ. अब आ जाए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सिस्टम के अंदर कन्फाइंड है.
अब पीस ऑफ वुड देखिए आप आयन लेके उसके अंदर एटम्स हैं, इसके अंदर भी एटम्स हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव कर रहे हैं बीच में। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? कन्फाइंड इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर नहीं आए ना, इसके अंदर ही कन्फाइंड है। अब इसके अंदर मुझे क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन में सॉल्व कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन अंदर है, कन्फाइंड है, ऑटोमेटिकली उसके आगे वैल्यूज क्वांटाइज हो जाएंगे, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं रह सकता वहां पे, ठीक है। So second is similarly जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, the moment you combine two atoms together, उनकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए तो आपकी एनर्जी लेवल्स स्प्लिटिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आपने एटॉमिक एनर्जी लेवल्स सुने होंगे सबने, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा है सबने, सुना है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा सुना हुआ है। और उसके बाद उसी तरह जब जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे आपका स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी बढ़ती रहेगी और बड़े हो जाएंगे, बल्क में जाएंगे तो बैंड स्ट्रक्चर आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जैसे हम एटम्स ऐड करते हैं तो आपका साइज डिपेंडेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर पे दिस काइंड ऑफ अनदर एस्पेक्ट। जब भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है? ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन से आ रही है। आपने बोला वेव फंक्शन, जब भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे किसी सॉलिड के लिए और उसकी एनर्जी नंबर्स को के साथ प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास ब्रेक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं? जो सॉलिड लेते हैं हम ना, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कन्फाइन कर दिया था। और ये क्रिस्टल पोटेंशियल के कारण आ जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल पोटेंशियल फील्ड में इन्फ्लुएंस कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके पास उसके बैंड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। You can start classifying your materials, ये insulating है, ये conducting है, whatever। तो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर पता होना चाहिए मुझे, किस सिस्टम में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल दैट डिसाइड्स कि किस तरह के आपके गैप्स किस तरह से बनते हैं, वो आपका एलिमेंटल लेवल पे करते हैं आप सारे। So I will go for one equation, then examples only. So this is your basic equation. 2 minutes on this because we इसको नहीं समझेंगे तो आगे कुछ समझने के बाद लॉजिक नहीं है उसको, जब भी हमें क्वांटम की बात करनी है। तो किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये बेसिक इक्वेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, हर एक टर्म को एनालाइज कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा, इसके बिना कुछ नहीं। तो ये हर एक टर्म आपने जो एटॉमिक डोमेन में इंडिकेट कर रही है वो इंटरेक्शंस इंडिकेट कर रही है, टाइप ऑफ एनर्जी टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। किसी मटेरियल्स में आयंस तो हो गई, लिपिड्स तो हो गई, उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फर्स्ट टर्म इंडिकेट करेगी। सेकंड टर्म इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स की भी मौजूद रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो थर्ड टर्म है ये है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन। सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है और अभी तक भी अनएड्रेस्ड पार्ट है ये मोस्ट ऑफ सिस्टम्स के लिए। इसको हम अभी भी अप्रॉक्सीमेटिंग करते हैं कि जो आपका थर्ड टर्म है डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगी और लास्ट में आयन की इंटरेक्शन होगी। इसके अलावा और कोई इंटरेक्शन का स्कोप इसमें बचता नहीं है। और पॉसिबल इंटरेक्शंस you can classify in this 5 terms। ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है आपने किसी भी सिस्टम के लिए। ये सिस्टम सॉल्व करना है आपने, ये वाली इक्वेशन तो बहुत सिंपल लगती है, तो मुश्किल तो नहीं है इसमें। ओनली 5 टर्म्स। आई शुड हैव द वेव फंक्शन, सॉल्व करिए, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। एनर्जी की वैल्यू आ गई तो आप एनर्जी से उस मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, हर तरह की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सुटेबल है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वी कैन मेक ये सिस्टम स्टेबल नहीं है तो यहाँ से डिसाइड होता है। फाइन। अब इसको सॉल्व करना बड़ा बहुत मुश्किल है। टेक्स्ट बुक में अगर आप तो रेफरेंस में डालूंगा आपको, ये क्वेश्चन आज तक सिर्फ 2 फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल है। आपने दोनों पढ़े होंगे, बता सकते हैं कौन से? श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन सिर्फ 2 फिजिकल प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल है एग्जैक्ट।
पढ़े सबने आपने, बीएससी में पढ़ते हैं। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर और दूसरा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्यों? सिंपलेस्ट है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसको सॉल्व करना इजी है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस दे आर वेरी वेरी सिंपल, वेरी डिफिकल्ट टू फैक्टर इन। ठीक है, इज इट ओके? सो नाउ आई एम डीलिंग विद सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर एनी सॉलिड, एनी मटेरियल, एनी मॉलिक्यूल। इन दैट केस डेफिनेटली I have to rely upon approximations. So there are large number of approximations. Approximation को लेक्चर बहुत छोटा होगा हमारा डिस्क्राइब करने के लिए। जस्ट एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि when we have to solve a many-body storage equation for any material, any molecule, any complex molecule, we have to solve this equation with lot of approximation. Approximation is which are logical. Not a blind approximation. Starting point is still atomic number only. No approximation there. While solving this equation, there are different kind of methods which are available, which are approximations are available, which we have to rely upon to solve this. So I'm not going for this. We just skip this part. Recently, this becomes too much of physics. I'll go for the last. To solve this equation, to solve this, we are presently you see that word DFT mentioned in the slide which I mentioned for AI genome project, DFT. So for solving this equation, density function theory happens to be one method. These were earlier methods, and this is the latest one which is available, most accurate one, discovered in 1964, that is available to us. Using this method, we can, I'm not doing for this, ये बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए। Last. So this is a final solution. This is the final solution for many body storage equation. जब सॉल्व करेंगे हम, जानते जाना है, सॉल्व करने के लिए अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो 6 साल लग जाएंगे। Practically once you master these techniques, आप आराम से कर सकते हैं। There are methods available, software is available इसके लिए। पॉइंट इज ये आपका लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होके आती है। इस एनर्जी नंबर से आप इंटरडॉमिक फोर्स निकाल सकते हैं, और फोर्स अगर कन्वर्ज कर रही है तो मतलब मेरा सिस्टम जो बनाया है मैंने वो स्टेबल है। फोर्स आपके हर जगह पे जीरो होनी चाहिए जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर नहीं है इक्विलिब्रियम में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस एनर्जी, दैट्स फोर्स वी कैन कैलकुलेट। सो दीस आर बेसिकली वी हैव जस्ट गिव दिस components and I will summarize this. This is basically summary. This is a summary of DFT methods for solving storage equation for any material. So these are the methods which are available to us. This is a basic equation we have to solve. So there are options for solving. We have to calculation with relativistic effect or without relativistic, that's possible. Then what type of potentials I am going to use for describing my system. These again different kind of options are available. Each one has a very lengthy theory and merits, demerits. And then going beyond DFT is also possible using other type of methods integrated in the same equation. Purpose you solve the same equation, but gain function method you can solve. There are variety of that options available. So once you solve this equation, you can start predicting various properties. There are a large number of codes which are based upon these, and I just mentioned few of the methods which are available free of cost. These are hybrid functions. This again not of your relevance. Once you start working with these methods, then you find need to understand this. हाइब्रिड फंक्शन बहुत जरूरी है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। मैंने बताया आपको कि बाकी सब चीजें एवरेशियो है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। उसको डिफाइन करने के लिए
वेरियस फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं और ये वैरायटीज अवेलेबल है टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एलडी एजीजी देन मेटा जीजी हाइब्रिड्स मेटा, तो ये ग्रेजुअली देयर आर थाउजेंड्स नाउ। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ईच वन ऑफ देम, जस्ट यू शुड हैव आइडिया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस के लिए देयर आर सम फंक्शन लाइब्रेरीज आर अवेलेबल, some are free, some are paid. This is again additional picture which we have to add for describing one-to-one interactions in our same equation. We have to add additional term to describe this. So this also there is possibilities here. These are recent addition in the last 10-15 years. I'll just skip this one. So maybe I just show one or two examples. आगे next just this one. One of these things you can note down. These are the codes which are available based upon quantum mechanics methods which can be used for describing various materials. Many of them are free, like Quest Siesta, Crystal is paid, FHI H is open max is open, and beside the VASP is paid, Castel is paid, Ability is paid, quantum expressor is free, and then all electrons, V2K is not, it's paid basically, and some of them are free. So these are the free online available. You can learn them, download them, and then start using them. It's for you. You can just start this without spending any money. It is possible. Next one. So I have been using these methods for studying various properties. But as good. लैपटॉप में लगा मुझे कोई बात उसको मैं अपने स्पेस में So these are the methods. You can just go through. I'll skip these details. So one, two examples I'll just mention. But each of these methods, they are very unique way of describing electrons. Ultimately, we have to have wave function for describing electrons. So every method has a very different way of describing electrons. If you have to be clear, it is difficult to understand. And these are the basically you can just see power of these methods. Once you solve this equation for any method, these are the system. You can see gold dimension here. These are the experimental values for lattice constant, bulk modulus, Quest energies, and then you can compare these numbers with various codes which are available with various approximations. The first one is black one is experimental. The rest of them are theoretical methods used for quantum mechanics. So numbers are pretty decent. They matches with the experimental data. These methods are very accurate. So we have to do this from scratch. 2 slides, results only. But जब भी आप किसी सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं किसी मटेरियल्स के लिए, तो जो कोड्स होते हैं कंप्यूटर में, उनका बाय नेचर क्या है वो पीरियोडिक सिस्टम के लिए डिजाइन होते हैं. Periodic means just like boxes, just you have various boxes. So each box, whatever you put in a single box, it will be in every box. So when you have to deal with this finite system like cluster, molecule, atom, I have to make a larger box so that there will be image interaction between one type of atoms with another ones. So to avoid that, what I will do is simply make a larger box. So take some box, whatever system you want to create, put that into the particular simulation box, and then we will solve certain equation for these atoms which are in the box. Once we solve that equation, we get the energies. From energies we get the forces. Then we convert the forces, and forces converge कर रही हैं. I can say my system is in equilibrium, it is relaxed. If that is there, then I go for its vibration analysis. Harmonic vibration frequencies we can calculate. And then if that is, though all numbers are positive, there are no imaginary frequencies, I can say my system is stable now. Thereafter, system is stable, I am predicted, found it to be stable. Then you can start asking questions, any question you want to ask. Start calculating any properties, whether it has been calculated experimentally or no.
you can start asking any questions of your choice. The system will start responding. If it is able to satisfy initial criteria, initial numbers, thereafter, it's a how wisely, why intelligently you can ask questions accordingly. You can have answers, and then you can start writing research papers. Everybody here? Part is you create virtual system in the computer, and then you will start dealing with these are the various tools available in various tools. So these are the basically not recent, but earlier we did a lot of work on the carbon nanosystems. So all carbon fullerenes, nanotubes, graphenes. So for approximately 12 years, I worked on carbon nanosystems. So based upon the similar methods, same quantum-based methods, and we could publish good number of papers, and some of them even with experimental collaborations. Carbon nanotubes, we have worked with these systems. Graphenes also we have worked the same systems. I'm just trying to show type of variety of work you can do with these techniques by sitting in your lab, even on your laptop also. Most of calculation which I started, I used to work only on my laptop only, without spending a single penny, simply designing the problem intelligently and then solving the equations. And these are basically systems on hydrogen storage solutions. We worked on CSI project, and we had a good number. ये अगर थोड़ा ध्यान देखिए, तो जब आपको कोई भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम करनी है, उसको आपको बहुत इंटेलिजेंटली फॉर्मुलेट करना होता है। अब इस प्रॉब्लम में हम करना क्या चाह रहे थे कि अलग अलग कार्बन नैनो स्ट्रक्चर जैसे आपके ग्रेफीन है, नैनो ट्यूब्स है, फुलरीज है, इन सब में क्या हो रहा है, आपके पास कर्वेचर चेंज हो रहा है। एक प्लेन शीट है, एक को आपने जोड़ दिया ट्यूबर के, बंद कर दिया, बल्ब की बॉल हो गया था 360, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे कर्वेचर चेंज कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है। ऐसा रिजल्ट होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। तो हमने मेटल हाइड्राइड्स जो आपके मटेरियल्स होते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं उनको, उनमें केमिस्ट्री में जा सकते पाएंगे उसमें आयनिक कोवैलेंट इंटरेक्शंस होती है मेटल हाइड्राइड्स में। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन बहुत टाइटली बाउंड है, हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते, निकालने के लिए उसको बहुत हीट करना पड़ता है। हीट करना पड़ता है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो हाइड्रोजन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़े तो पर्पल डिफीट हो गया। हाइड्रोजन चिपके जा रहे हैं, वैसे ग्रीन एनर्जी चाह रहे हैं उसमें। तो हमने इसमें प्रेडिक्ट किया कि कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करें, इनके ऊपर मेटल हाइड्राइड्स के क्लस्टर्स रखे जाएँ तो हाइड्रोजन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसमें 60% तक डिक्लाइन हो जाता है। तो वो एक एक्सपेरिमेंटली भी किसी और ग्रुप में बीएचयू में ग्रुप है उन्होंने किया हो और रिजल्ट उसी लाइन पे आया है। ठीक है ना, तो उस तरह से काम करो। तो प्रॉब्लम डिफाइन क्या करनी है, प्रॉब्लम एक थी, अब आप पार्ट्स में करते हो, तो इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स करने के बाद फिर हम एग्जैक्ट सोल्यूशन में पहुंचे क्या है, इसका सोल्यूशन ये निकल सकता है। फिर जिनके साथ आप बात की उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया इसको, वहाँ भी इस तरह के रिजल्ट आपके आते हैं। These are the clusters you can have this work on. ये 2D मटेरियल्स है बड़े ये अलग से जो पिछले कुछ सालों में काम किया आपने। There are variety of 2D materials. हर तरह की मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बहुत अलग है, आप किसी में भी काम कर सकते हैं, हर एक की प्रॉपर्टी अलग है, हर एक इंडिविजुअल में आप इसको डील कर सकते हैं। पैरेलली ये तो हो गया ना, इसके बाद अभी क्या हो गया, इसके अभी 2D मटेरियल्स को कंबाइन करके यहाँ तक भी बात चलेगी आगे, इससे आगे चलेगी। अब 2D मटेरियल्स का मतलब क्या है कि सिंगल थिन लेयर में एक एटॉमिक लेयर मटेरियल्स 2D मटेरियल्स। अब अलग अलग 2D मटेरियल्स ले सकते हैं, आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं हेटेरोस्ट्रक्चर्स। तो पिछले 10 साल में हेटेरोस्ट्रक्चर में बहुत सारा काम हुआ है। यू टेक एनी फंक्शंस, कोई दो मटेरियल, एक इंसुलेटिंग हो सकता है, एक मेटलिक हो सकता है, एक सेमीकंडक्टिंग हो सकता है, तो लिको स्ट्रक्चर आप जितनी लेयर डालना चाहे डाल सकते हैं, उनके बिहेवियर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं और लैब में आराम से उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सारा काम हम ये सारे आपके कंपटीशन मॉडल्स हैं बताइए, जो मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, इस तरह से इनको भी यूज किया जा सकता है आराम से। हेटेरोस्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप, बहुत सारे वैराइटीज हैं इनकी। ठीक है, नॉट ओनली टीएमपी यू कैन कंबाइन एनी टू स्ट्रक्चर्स नाउ, तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी है इसमें व्हिच इज अवेलेबल टू अस। तो इसमें उनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है।
अब अलग अलग हेटेरोस्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे, FT बनाने के लिए ग्रेफियर MOS2, ये इंजेक्शन के लिए करना हो तो अलग कॉम्बिनेशन, कैटालिसिस के अलग कॉम्बिनेशन। तो लिमिट नहीं है इस तरह के एरिया में काम करने के लिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपको क्लियर है। देयर आफ्टर any combination you can work on, any combination you can try, depending upon what type of application I want to go on. क्या करना चाह रहा हूँ उसमें कॉम्बिनेशन के साथ में, और इसको केमिस्ट्री में यूज करूँगा या मटेरियल में यूज करूँगा, उस तरह से। तो इस तरह से बड़ा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है सारे करने के लिए, और ये सारे के सारे काम जो आपने इन्हीं तरह से किया हुआ है। ये वाटर स्प्लिटिंग वाली प्रॉब्लम थी बड़ी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, हाइड्रोजन जैसे बात की एक प्रॉब्लम डिफाइन किया, एक सिमिलरली प्रॉब्लम एक और करने की कोशिश की हमने कि वाटर से हाइड्रोजन को स्प्लिट किया जाए। वाटर से हाइड्रोजन निकाली जा सकती है, मगर उसको एनर्जी दे के निकालेंगे तो ग्रीन मेथड नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी के साथ सोलर एनर्जी यूज करेंगे और बीच में कोई कैटलिस्ट यूज कर ले। कैटलिस्ट जो आपका इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए जो रिएक्शन है, उसके लिए एक सुपर कैटलिस्ट बन जाए हमारे पास। तो रूम टेम्परेचर पे सनलाइट के साथ हम हाइड्रोजन बना सकते हैं वाटर से स्प्लिटिंग के थ्रू। तो इस पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ। उसी तरह से हमने इसमें कॉम्बिनेशन, ये रिएक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी जो बैंड स्ट्रक्चर को उसके एक करेक्टर प्रॉपर्टीज है कि फर्मी लेवल कहाँ पे होना चाहिए दोनों लेयर्स का, कैसे डील करेगा आप उसमें, और उनकी वैल्यूज कुछ एक थ्रेशोल्ड लेवल के बीच में रहनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप इनके साथ स्प्लिटिंग कर सकते हैं और उसको हमेशा यूज कर सकते हैं। तो उस तरह काम भी हमने इसमें किया है, और अल्टीमेटली उसके लिए ये प्रोजेक्ट हो चुके हैं सारे रिजल्ट्स हैं। एक्चुअली टाइम मेरे पास कितना है, 5 मिनट्स तो डिवाइड कर रहा हूँ। और ये सारे इसके मेथडोलॉजी अलग अलग ट्राई करते हैं, कंबाइन देम टुगेदर, देन डू इट्स ऑल एनालिसिस स्टैकिंग से लेके सभी। ये सारे के सारे मेरे इन्हीं मेथड्स हैं जो अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की मैंने। तो यहाँ से आपको क्लियरली कि बेड स्ट्रक्चर टाइप 1 है, टाइप 2 है, एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट, और अल्टीमेटली जो कॉम्पिटिशन वायबल है उनको आप फॉर्मेशन कर सकते हैं जनरल सर्वे। ये फिर हमने आया था हमारा ये कॉम्बिनेशन, इसमें वैल्यूज एनकरेजिंग थी, तो इसको ऐसा प्रेडिक्ट किया था हमने, और ये एक अच्छे जर्नल में पब्लिश भी हो गया था, और अगर उसके कवर में भी काम किया था। ये इसका काम था, ये वाला, इसमें विवेक यहीं पे है मेरे पास, स्टूडेंट मेरा, इस तरह काम भी किया है। और एक इस तरह काम भी आपके थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हेटेरोस्ट्रक्चर्स की, उस तरह काम भी हो सकता है। ये काम भी होता है, इसको भी ठीक एप्रिशिएशन मिलेगी। ये इस जगह के नैनो स्केल की कवर पे आया था काम ऑनलाइन। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। ये हिसाब में कुछ पेपर्स जो लिखे मैंने आपको मेथड्स हैं जो अगर वैरायटी ऑफ एरियाज में काम कर सकते हैं, डाइवर्स एरियाज में वो पॉसिबल है करना। तो स्टूडेंट्स आई थिंक मुझे यही पे रुकना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा वाइड था, बहुत डीप में है, बट मैंने कोशिश की सरफेस में रखने की, ताकि आप फ्लो के साथ थोड़ा इसको समझ पाए, इसकी इंटीग्रिटीज और इसका पोटेंशियल, सो दैट आगे इस पर काम करना चाहें तो एटलीस्ट आपके लिए ऑप्शन बनेगा। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। थैंक यू। The session is now open for discussion. Any questions from the participants? या सब कुछ समझ आ गया या सब कुछ समझ नहीं रहा है? समझ गया है या सब समझ आ गया? सर आई हैव अ क्वेश्चन। तो आपने शुरू में बताया 800 मटेरियल्स प्रोड्यूस किए एआई से जो स्टेबल थे, उनमें से कितने की प्रॉपर्टीज वो ऑटोमेटिकली स्टडी की है, उसे मैनुअली करना पड़ेगा? सब कुछ तो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी की सब कुछ नहीं। अब देखो कोई भी आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी निकालते हो, क्या करते हैं, पर्टिकुलरली मेरे पास उसका सॉलिडिफिकेशन सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, सिस्टम मेरा बन गया। उसके बाद तो कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी हो, उसी में से डेरिवेटिव क्वांटिटीज,
उसके लिए हम पहले क्या करते थे, ये काम करते थे सभी लैब में करते, छोटे छोटे कोड लिखते थे, फोर्स कौन से निकालना है तो डेरिवेटिव ले लिया वहाँ से, तो सारे मैनुअली करते थे। तो फोर्स कौन के आगे मैट्रिक्स बन गया, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, वो चीज़ हम जो पार्ट्स में कर रहे थे, टुकड़े में कर रहे थे, वो सारा ही सारा ऑटोमेटिक में प्रोग्राम बना दिया हमने। सर तो इसे रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। कभी कभी मैं अपनी रिक्वायरमेंट डालूं, वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मटेरियल ढूंढ दे कि ये इस कॉम्बिनेशन का ये काम। एक पर्पस वही है उसका, वही सर्वे कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, तो इन्होंने 3.2 मिलियन कॉम्बिनेशन प्रेडिक्ट कर दिए। एक टूल की बात कर रहा हूँ, 4-5 टूल चल रहे हैं प्रेजेंटली। हर बड़ा इंस्टीट्यूशन अपना AI टूल बना के, तो पिछले 4 साल से, कोई 5 साल से एक मटेरियल प्रोजेक्ट में ऐसा ही पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेट प्रोसेस करके मिल जाएगा। उसमें लैक्स ऑफ मटेरियल प्रेडिक्ट कर दिए। अब लैक्स में से कौन से स्टेबल है, उन्हें हर डाटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ भी दिया वेबसाइट। आप सारे डाटाबेस देख सकते हैं, अल्टीमेटली क्या उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसमें हर एक प्रॉपर्टी जो चाहिए हमें कॉम्बिनेशन देख देखते हैं, जिसके सारे पैरामीटर ठीक है कि AI टूल प्रेडिक्ट करना कि ये बनाया जा सकता है, स्टेबल है और इसकी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद उसकी जो रोबोटिक आर्म है वो काम कर रही है केवल। तो वो AI टूल की एक्यूरेसी कितनी है, 100% है कि ये वेरी कर रही है? ये उसने प्रेडिक्ट कर दिया दिस इज स्टेबल, बट एक्चुअल में वो स्टेबल हो या ना हो। इसमें है ना 2 तरीके से इसके क्वेश्चन को। जो हमें तकरीबन 20 लाख के आसपास डाटाबेस है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का ऑनलाइन, 20 लाख के आसपास, जितने भी अब तक रिसर्च हुई सबका 20 लाख में से अब तक पिछले 5 डेकेड्स में सिर्फ 20,000 ही हम कंफर्म कर पाए कि हाँ ये स्टेबल है, पिछले 40-50 साल में। अब इसने जो AI जीनोम टूल की बात करें हम, इसने 3.2 मिलियन कॉम्बिनेशंस विद इन वेरी शॉर्ट टाइम प्रेडिक्ट कर दिया कि ये हो सकते हैं। और उसके बाद जब एडिशनल टूल लगाए जैसे हम करते हैं सिमुलेशन में, कि स्ट्रक्चर तो बन गया, स्टेबल दिखा रहा है, हम क्या करते हैं उसके बाद उसका वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है कोई भी आपकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फोनो स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, वो एनालाइज करते हैं। जिनके लिए वो पॉजिटिव है वही नेचर में यूज करने चाहिए। तो इसने तो खुद ही प्रेडिक्ट करके वो बाद में आउट ऑफ 3.2 मिलियन से कहा नंबर ले आएंगे 3,80,000। इसका जो नंबर है वो 3,80,000 ऐसे मटेरियल, नए मटेरियल जो बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल स्टेबल है। तो 3,80,000 में से पिछले 1.5 साल में 700 जो नंबर देखा आपने, वो एक्चुअली बनाए जा चुके हैं। बाकी बनाने में टाइम लगेगा, हमें 50 साल लगे, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें, और तब तक नॉलेज को छोड़ेगा नहीं करने के लिए। Any other question? So thank you, sir. Your in-depth knowledge of the subject and your hard work, we are deeply appreciated by it. Before moving forward, I would say Schrodinger cat may not need a break now, but our speakers, they have put in so much efforts, like Professor Hitesh and Dr. Harpreet. They have really wonderfully presented their talks, so they might be needing the break. May not participants, they might not be needing it, but speakers, they need it. Meanwhile, I acknowledge the presence of